This is Shayantani from Filmy Beat, and we are here with Mohit Malik today from Chamak the Conclusion. So, I have set a few questions, Mohit, for you, Hmm. and I will you ask you one by one. So, first, tell us something about your character, Gurudev. ओके सो आपने सीजन 1 देखा? जी नहीं, अभी तक नहीं देखा। नहीं देखा। ओके तो ओके तो गुरु ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ द देओल फैमिली। प्रताप देओल प्लेड बाय मनोज पावा जी। देन उनके दो बेटे हैं और एक बेटी है। तो ये छोटा बेटा है, बीच वाला है, और ही इज गे। एंड जो कि यू नो he is still in the closet. He's still not come out in open. बट सीजन 1 में एक सीन होता है जहाँ पे इसका एक वीडियो वायरल हो जाता है और दुनिया को पता चल जाता है कि ये ही इज गे। एंड so the character is somebody who's repressed with emotions, somebody who is always wanted to prove himself to his dad, क्योंकि उसको कभी अपने डैड से अपनी फैमिली से कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला। सो yes, he's living a very painful life, and there's always a need of love. There's always a need of acceptance, acknowledgement from his father, from his family, from the society, and but at the same time, he has his own traits. He's very resilient. He's very courageous. And there's this sensitivity in him. Uh, and at the same time there is a survival instinct in him, which always keeps him going. And so his whole purpose of life, I think the main desire or want, I would say, in his life is to prove to his dad that that he's capable enough, that he is good enough. And his मतलब only conflict, I think उसका एक inner voice जो है, जो always keeps on troubling him, is that he's not good enough, he's not good enough, because बचपन से ही वही डाला गया दिमाग में कि तुम अच्छे नहीं हो, तो आदमी बिलीव कर लेता है कि आप अच्छे हो ही नहीं। But at the same time, he has this great amount of business acumen, जो कि आउट ऑफ द तीनों बच्चों में से यही एक है जो एक तीजासुर, जो हमारी कंपनी है, जिसको ये आगे लेके जा सकता है। बिकॉज और बाकी सारे किसी में मतलब वो बात ही नहीं है। बहन को कुछ और करना है, भाई इज नॉट, ही इज इनटू सम अदर थिंग्स इन लाइफ and miserable in life. And but this guy is fighting it through. That's why I said survival instinct, because he is you know trying to be sane at the same time, because so much of so much of pressure around him of being gay, or and to be with such sexuality and to live in Punjab is not an easy thing. So to it's a it's a beautiful character. So obviously there is a lot of suppressed anger. There's a lot of suppressed rage in him. जो अब सीजन 2 में आपको वो he will actually, it will come out in terms of violence. And so that's why you know जिसने सीजन 1 देखा है और अब सीजन 2 देखेगा, he will see a drastic difference between Guru in season 1 and Guru in season 2. So there's a complete transformation which happens in Guru because of some certain things in life, because उसकी जिंदगी में ऐसे कुछ triggers होते हैं, जहाँ पे uh, he takes over, he takes charge, and takes charge of Tijasur, takes charge of his life, and takes charge of his family, and he stands for his family. So it's a beautiful journey and beautiful transformation. Yeah. How did the role of Guru shape you as an actor? I think a lot of confidence has come in between me, because I never thought I would, unless आप आपको लगता नहीं, आपको कभी पता नहीं होता आप क्या कर सकते हो और किस लेवल तक जा सकते हो, कितना एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को। तो मैं हमेशा अपने आप पे डाउट करता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन
I tried my best and tried to explore Guru as much as possible. I think so that has, and working with Rohit sir has, it has been a great experience in terms of an actor. I've learned a lot from him. I've learned a lot from other actors in the show, and yeah, as an actor, I think I've grown in terms of self belief, in terms of confidence. So, because obviously, the character also gives you a lot because the character has this beautiful traits in him, like resilient. He's so resilient. He's so courageous. He's so, that survival instinct type I was talking about. I think it gave me that thing while playing Guru. And so, as an actor, also it reflects. Okay. So, in his earlier interview, Rohit said that it is your character, Guru Deol, whom he likes the most in the entire Okay. series. Oh, So, did he say that? Okay, okay. yes. So, what do you like to say about it? How do you feel? I think it's all him because उन्होंने लिखा है, उनकी ही देन है और जैसा कि हमारा काम होता है कि उस किरदार में सिर्फ जान फूकना। किरदार लिखा तो उन्होंने ही है, ढांचा तो उन्होंने बनाया है, हमें सिर्फ उस कैरेक्टर में जान डालनी होती है। दैट्स व्हाट वी डिड एंड खूबसूरती से लिखा है उन्होंने। ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। I mean, obviously, I would like to also take the credit, but it's all teamwork. It's teamwork. It's not about just one person. मैंने कह दूं कि मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। Everybody has to be on the same page, and it's always the teamwork, be it from the writer to the director to the actor to the editor, and to the everybody, to the costume, to the the music behind you. Everything matters at the end of the day. So I think all the credit goes to the team. It's not about me. Uh, but I'm glad that but he's been always been saying that that Guru is his favorite character. Um because I tell you, because of his transformation, it's very inspiring. The way he comes out of this shell and takes charge. So you have to see the season two to actually see what happens to Guru and how he takes charge, and that's why it is so beautiful. That's why he must be saying that it's his favorite character because the transformation is there. तो अब किसी की भी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो ज्यादा खूबसूरत हो जाती है लाइफ और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर वही स्टैग्नेंसी होती है, जैसे अगर मैं किसी को देखूं, किसी कैरेक्टर किसी इंसान को मैं जानता हूँ, अगर मैं 5 साल पहले भी वही देख रहा हूँ, आज भी मैं उसको वैसा ही देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ ग्रेटनेस नजर नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि इसने अपने ऊपर कोई काम किया है। बट अगर मैं किसी को देखूं कि यार 5 साल के बाद मैं अब देख रहा हूँ उसको और मैं देखता हूँ यार यार ही ग्रोन सो मच एज एन इंडिविजुअल, ही बिकम सो बेटर एज एन इंडिविजुअल। So I think that's what's interesting to me. So it's always about becoming the better versions of yourself, and I think that's why he must be saying. Uh, so गुरु का ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें बहुत बढ़िया, तो that's why he must be saying. And how did you shape the role of Guru that makes it the favorite character of the director? I did whatever I could, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे आता है और जितना मेरी क्षमता है, पूरी ऑनेस्टी के साथ काम किए, सारे सीन्स किए। और आई एम ग्लैड दैट ही सेड दैट। रियली रियली ग्लैड। Anything you would like to reveal to the audience that from that they don't know from the synopsis or the trailer about your character? Okay, so I think he is not the same Guru. He will be bold, he will be brutal, he will be very indifferent, and and obviously, as I said, there's a lot of rage which will come out in terms of violence. And the whole show, the season two, is all about conflict, where the conflict starts, where Kala comes in to take revenge for his father's death, and how Guru is there to protect his father. And so this Guru versus Kala, and there'll be revenge, there'll be retribution, बहुत ज़्यादा, you know,
ब्रूटल होगा, गोरी होगा, म्यूजिक होगा, बहुत सारा, बहुत ड्रामा होगा, बहुत एंटरटेनिंग होगा. दिस इज द बेस्ट सीजन आई वुड से. And who is your favorite co-star from the entire series? काला. ये काला सभी यार बड़े. काला ऑब्वियसली अपना चीमा, परमवीर चीमा इज, he's so good, and we have had so much of fun shooting together this show. uh, you know uh, so yeah, Param is one of my favorite co-stars. Okay. Any amusing anecdote from the set that you would like to share with your fans? uh, from the set, yeah. So Guru is the only character in the show which has three looks. you know एक लुक आपने भी पहले सीजन में देखा होगा जहां पे उसके घुंघराले बाल हैं. फिर there will be another look in says there will be two different looks in season 2, from घुंघराले to become straight, and then in the end there's another look. So uh, really interesting. मतलब और कोई ऐसा कोई इंसिडेंट तो मतलब मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, बट हाँ मतलब अभी हाँ मतलब हम हमें याद है, हम वी वर शूटिंग इन गुड़गांव, एंड हु प्लेज माय ब्रदर Dhanveer. we we all we used to go swimming, me, Param, Dhanveer, Manoj ji. We used to swim in the morning whenever हमारी शूट नहीं होती तो हम स्विमिंग करने जाते थे होटल में. और एक बार जो मेरा भाई बनता है उसने लोअर इसमें डीप नहीं था, वहां पे उसने डाइव मार दी थी, एंड उसका नेक यहाँ पे इंजर्ड हो गया था. दिस इज वन ऑफ द फनी इंसिडेंट वी स्टिल रिमेम्बर, एंड whenever we meet we laugh about it. बट बच गया, कुछ हुआ नहीं उसको. बट या मतलब क्रेजी क्रेजी यार, दे ऑल आर क्रेजी. मतलब कैसे शूट किया है, इतनी मस्ती करी है हम सब ने, और कैसे कंट्रोल करके अपना काम करते थे. बट बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं शो में. और या बहुत मजा आया. Lastly, any message for your fans so that they watch the season 2 of. One more thing I would like to also say that that मनोज जी के साथ जो होता था ना, मनोज जी ऑफ स्क्रीन भी मेरे साथ वैसे ही बिहेव करते थे जो ऑन स्क्रीन कभी कभी सीन्स में हुआ करता था. स्टार्टिंग में पहली पहली बार जब वो एक्चुअली हम शूट पे सेट पे आए, तो उनकी तरफ से मुझे जो वाइब आती थी वो वही वाइब देते थे जो एक्चुअली ऑन स्क्रीन होनी चाहिए थी. तो ऑफ स्क्रीन भी वो मुझे वही वाइब देते थे, ताकि ताकि वो मेरे लिए काम किया. एक्चुअली वो पहली पहली बार मैं भी थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन दैट दी दैट्स दी that's the talent, that's the guy, that's the actor he is. कि वो ऑफ स्क्रीन भी मुझे वो वाइब दे रहे थे ताकि मेरे अंदर से वो रिएक्शन निकले ऑन स्क्रीन, एंड इट हेल्प. इट रियली हेल्प. एंड जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप बेहतर होता जाता है शो के दौरान, वो मेरे साथ ऑफ स्क्रीन भी बेहतर होते गए. और इट्स अमेजिंग हाउ ही वर्क्स, एंड इट हैज वर्क फॉर मी. एंड सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई वुड लाइक टू share, and audience to know that what happened. Great. I have to wrap the interview. It's really nice to talk to you and take care. I wish you all the best for your upcoming series. Take care. Thank you so much. Please watch it. Thank you. Thank you.